Hi and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button, click the bell icon for more videos. I am Iftikhar Ali and in this video we will discuss about the MCQs related to business statistics and mathematics because upcoming papers are expected in MCQ formats, not sure but expected. So this video will be beneficial for both graduation level and intermediate level. So let's start to solve the MCQs related to the first chapter of statistics, or we can say business statistics and mathematics. Introduction to statistics. First MCQ is that the word statistics may have been derived from the German word. Correct option is statistic. Option number B. The data which have not undergone any statistical treatment is primary data. कोई भी डाटा जिसकी कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अभी तक ना हुई हो या रॉ डाटा, वो आपका प्राइमरी डाटा कहलाएगा. If the data are classified according to their time of occurrence, then this procedure is called chronological classification. MCQ number 4, that a characteristic that is qualitative in nature is A or N. Correct option is attribute. Continuous variable can be measured at all possible points. कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल या डाटा की एक आसान सी लॉजिक समझ लें कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या डाटा वो वेरिएबल या डाटा है जो कि मेजर किया जा सकता है या उसको लेंथ के अंदर या वेट के अंदर, तो उसके अंदर तमाम पॉसिबल पॉइंट्स मुमकिन है, जबकि जो डिस्क्रीट डाटा है उसको काउंट किया जा सकता है. The continuous variable can be measured at all possible points. Census reports for public are sources of secondary data. क्योंकि सेंसस के अंदर डाटा पहले से कलेक्ट हो चुका होता है, तो ये फर्स्ट हैंड डाटा नहीं कंसिडर किया जाता, तो ये सेकेंडरी डाटा कंसिडर होगा. A measure computed from sample data is called statistic without S at the end. Group data is also called secondary data. Statistics must be comparable. A measure computed from population data is called parameter. ये दोनों बड़े important question है. एक a measure computed from sample data और measure computed from population data. MCQ number 11. Statistics is always aggregates of facts and figure. यानी फैक्ट्स एंड फिगर का ये मजमुआ कहलाता है. अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई भी ओवरऑल पॉपुलेशन का अगर कोई आप सिलेक्टिव पार्ट जो है वो ले लेते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो वो पार्ट जो है वो सैंपल कहलाता है. एनी फिनोमिनन व्हिच इज नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. खसूसियत एट्रीब्यूट, इसको मेजर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ फ्लावर, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये एट्रीब्यूट कहलाएगा. डाटा ऑब्टेन्ड बाय इंटरनेट सोर्सेज आर सेकेंडरी डाटा. क्योंकि पहले से कलेक्टेड होता है तो आप वहां से जाके लेते हैं, तो वो सेकेंड हैंड डाटा है, सो सेकेंडरी डाटा. द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न्ड विद द प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. Statistics are collected in a, option number B is correct, systematic manner. Issue a new ID card is an example of registration. Students divided into different groups according to their intelligence and gender will generate qualitative data. क्योंकि इसके अंदर आप नंबर्स असाइन जो है वो बाद में अगर आप अपनी तरफ से करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जेंडर में आप मेल या फीमेल लिखेंगे. इंटेलिजेंस के अंदर आप इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, डल, तो वो उनको नंबर्स नहीं आप असाइन करते, बल्कि
उनकी खसूसियत को लिखते हैं, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। The data which have already been collected by someone are called secondary data. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये। वेट ऑफ द अर्थ इज, चार ऑप्शंस हैं, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि वो मेजर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ऑल पॉसिबल पॉइंट्स के अंदर, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बात। फिर उसके बाद इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डाटा। A variable that assumes only some selected values in a range is called discrete data. Color of flower is an example of, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, qualitative variable. Listing of the data in order of numerical magnitude is called arrayed data. A variable that assumes any value within a range is called continuous data. और discrete data में क्या आएगा? Some specific value. उसके बाद द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिपोर्ट्स, मैगजीन्स एटसेट्रा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है तो वहां से हम लेते हैं, तो ये हमारे लिए सेकेंड हैंड डाटा कंसिडर होगा। स्टैटिस्टिक्स इज इन सिंगुलर सेंस मींस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंगुलर और प्लूरल सेंस के अंदर। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस correct option number A, presentation of data in table, graphs and charts. Inferential statistics is a science of inference. ये दोनों भी important हैं, descriptive and inferential. Variable in terms of measurements such as weight, length and height is called, already discussed, that it is continuous variable. Variable in terms of count such as number of students in a class is called discrete variables. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। A data which is countable is called discrete data, whereas a data which is measurable is called continuous data. A data which can be defined in terms of quantity is called quantitative data. A data which can be defined in terms of quality is called qualitative data. A variable which depends on another variable is called dependent variable, क्योंकि ये depend करता है किसी और variable के ऊपर। A variable which does not depend on another variable is called independent variable, क्योंकि ये अपने अंदर change के लिए किसी दूसरे variable के ऊपर depend नहीं करता। Non-measurable phenomenon is called attribute, ये हम already discuss कर चुके हैं। Weights of students in a class is an example of continuous data, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल पॉइंट्स के ऊपर काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये 50.5 भी हो सकता है, 50.9, 60.7 भी हो सकता है, इवन 70 भी हो सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा की एग्जांपल है। इन स्टैटिस्टिक्स वन कैनॉट स्टडी इंडिविजुअल, क्योंकि हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एग्रीगेट्स of facts and figures, so ये aggregate को discuss करता है, individuals को नहीं। Statistical results are always true on average. A value which does not change from one individual to another is called constant. और इसका उलट जो है वो variable है जो कि change करता है, value changes from one individual to another is called variable. A variable in which a data has any value within a given range is called continuous variable. A variable in which a data has some specific value within a given range is called discrete variable. ये वही फर्क है continuous और discrete का, लेकिन वो मुख्तलिफ वर्डिंग चेंज करके आपको पूछ सकता है। Predicted और estimated variable is called dependent variable, जो कि predict किया जाए। A variable that provides the basis for estimation is called independent variable. Color of flowers is a or an attribute. Information gathered from each and every individual of the country or population is called census survey. So ये पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और ये साइंसेस के स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ICS 1 स्टैटिस्टिक्स और ICOM 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और डेफिनेटली BCOM 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, all can be benefited from this video. So thank you, stay touched for more video and stay safe and stay blessed and take care of yourself and your
respondents. Thank you.